Hello everyone, welcome to the new video, and in this video we are going to see CWC Syllabus for Management Trainee for the subjects Marketing Management and Supply Chain Management. Well, one day ago we saw the syllabus for the Human Resource Management and Industrial Relations, and अगर आपने वो देखा नहीं है तो उसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के बाद दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप चेक कीजिए. Well, talking about the Marketing and Supply Chain Management, let's see what does the syllabus actually have. Now, as you can see on screen, marketing management. See, marketing concepts, like whatever the basic concepts are there in marketing, we have to read all. Then marketing of services, advertising, PR, brand management, target market segmentation, positioning, rural and social marketing, promotion management, B2B, that business to business marketing, CRM, customer relationship management, marketing research, consumer behavior. प्राइसिंग थियरीज़ की बात करूँ तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग, सारी चीज़ें पढ़ के रखना. ओके, एंड if anyone out there from the IBPS SO marketing, okay, so whatever you have read, you have to read all. Okay, apart from that, if anything is added, it will be better for you only. Okay, so this was for the marketing management. Next, supply chain management. Supply chain management basic concept, what does it mean, what is it all about. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये कहीं ना कहीं कह सकते हो आपके HR में भी है. ओके, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, BPR बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, एग्रीगेट प्लानिंग, सप्लाई चेन नेटवर्क, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंटरी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. ओके, अभी ये जो आप पढ़ोगे सिलेबस, मेक श्योर यू स्टडी वन बाय वन. ओके, किसी भी तरह से कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं, बट स्टिल you make it a proper plan. There is 1 month to go for the exam approximately. Okay, so make sure you do it very well. And now we will see schedule of the exam के एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या है आपके पोस्ट के हिसाब से. We will see in details. Now, see, मैनेजमेंट ट्रेनिंग जनरल एंड टेक्निकल का 1 शिफ्ट में रहेगा. 3 आवर्स का एग्ज़ाम है, दैट इज़ ऑन 28 मई, सुबह 9 से लेके 12, तो 3 आवर्स का ये रहेगा. नेक्स्ट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल एंड अकाउंटेंट का 28 मई को ही है, 3 आवर्स में 2 to 5. देन जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर 1 शिफ्ट में रहेगा. 29 मई को है, लाइक 9 AM to 11:30 PM या 9 AM to 12 PM, 2 hours 30 minutes का एंड 3 आवर्स का. सुपरिटेंडेंट का 29 मई को रहेगा, 2 PM to 4:30 PM. देन जूनियर सुपरिटेंडेंट प्रिलिमिनरी 30th मई को, एंड टाइमिंग इज़ 11:30 AM to 12:30 PM, 2 to 3, and then 4:30 to 5:30. ओके, सो ये था सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम डेट्स के बारे में. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द HR एंड मार्केटिंग, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. अभी तक के लिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया.